प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्कार एनबी নিউজৰ এই অম্বুবাচী বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। মই দেৱপ্ৰতিম আহি আজি উপস্থিত হৈছোহি অম্বুবাচীৰ খবৰ ল'বলৈ আৰু অম্বুবাচীৰ খবৰ ল'বলৈ আহি আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোহি মা কামাখ্যা ধামৰ ঠিক তলিতেই আৰু ইয়াৰ পিছতেই আমি কিছুদূৰ আগুৱাই যোৱাৰ পিছতেই আমি গৈ পামগৈ কামাখ্যা ধাম আৰু তাত গৈ আমি বিভিন্ন দৰ্শনাৰ্থী বিভিন্ন ভক্ত আৰু বিভিন্ন সাধু সন্তৰ সৈতে আজিৰ অনুষ্ঠানত কথা পাতিম। আমি আহি ইতিমধ্যে কামাখ্যা ধামলৈ যোৱা পথৰ মাজ ভাগ পাইছোহি আৰু কিছু দূৰ আৰু মাত্ৰ অলপমান দূৰ আছে তাৰ পিছতে আমি গৈ পামগৈ মা কামাখ্যা ধাম আৰু তাতেই আমি ভক্তগণক লগ কৰিম আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে সাধু সন্যাসীসকলকো লগ কৰিম। বাটে পথে আমি বহু লোকক লগ পাইছোঁ, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ আৰু মনৰ বতৰা লৈছোঁ। ভাল লাগিছে বহুতে। আজি 5 বছৰৰ পৰা আহি আছোঁ। হয় এইবাৰ আৰু অলপ বেছি খোজ কাঢ়িব লগা হৈছে। একো নাই আৰু এইখিনি চলি যায় আৰু মা কামাখ্যাৰ কাৰণে চলি যায় আৰু। ऐसा है कि अम्बुबाची का जो मेला है ये मेला नहीं है, ये हमारी जान लीजिए ये धर्म की एक बहुत प्रथम धरोहर है ये। और इतनी अच्छी जो है यहाँ सुविधाएं हैं और माई की लीला तो अपरंपार है। योग माया त्रिपुरा सुंदरी तो नाम ही है। यहाँ की इतनी अच्छाइयाँ हैं, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हैं। लोग बहुत आनंद से माई का दर्शन कर रहे हैं और भक्ति भाव भरपूर है और हर जगह के बच्चा यहाँ पर बहुत ही आनंद आया। हम तो अयोध्यावासी हैं और इतनी अच्छी यहाँ पर भाव है, लोग भी अच्छे, यहाँ पर प्रशासन भी अच्छी है और आप लोग भी बहुत अच्छे यहाँ से गाइड कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे समस्त देशवासियों को कि अम्बुबाची जरूर आएँ। ये मेला ही नहीं है, ये हमारी माँ का एक बहुत ही दिव्य जान लीजिए दरबार चल रहा है। क्योंकि अन्य जगहों पे जो वत्सला में होते हैं लोग वहाँ पर अछूत मानते हैं, यहाँ पर अछूत की कोई वो नहीं है। यहाँ पर पूजा पाठ बंधन अर्चन किया जा सकता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर बहन बेटियों को आना चाहिए और मेरा शुभकामनाएँ भी हैं कि यहाँ जरूर आएँ।
কামাখ্যা ধামৰ চৌদিশে এতিয়া কেৱল ভক্তি আৰু আধ্যাত্মৰ সুৰ আধ্যাত্মিকতা যেন চৌদিশে ৰজন জনাই আছে চৌদিশে যেন গুঞ্জৰিত হৈছে কেৱল আধ্যাত্মিক সুৰ আপোনালোকে যিফালে চাই সেইফালেই কেৱল ধৰ্ম ভক্তি আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ চৰ্চা এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ যি স্থানত বাবাসকলে বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ পৰা অহা সাধু সন্যাসীসকলে বিশ্ৰাম কৰিছে সেই স্থানত উপস্থিত আছোঁ কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকৰ মাজত যেন কোনো বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন নাই বিশ্ৰাম যেন তেওঁলোকে অনুভৱেই কৰা নাই তেওঁলোকৰ ভাগৰ যেন তেওঁলোকে অনুভৱ কৰা নাই তেওঁলোকৰ প্ৰতি মুহূৰ্ততে তেওঁলোকৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল মা কামাখ্যাৰ নাম আৰু ভক্তিৰ সুৰ আৰু অম্বুবাচী যিহেতু চলি আছে গতিকে কামাখ্যা ধামত বহু দেশী বিদেশী সাধু সন্যাসীৰ ইতিমধ্যে ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ মাজত বিশেষভাৱে চৰ্চাত আছে এগৰাকী বিশেষ বাবাগৰাকী হৈছে চকলেট বাবা হিচাপে তেখেত পৰিচিত তেখেত এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ অনুভৱ জানিব বিচাৰিছোঁ তো कैसा लगता है आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे मैं 35 सालों से आता हूँ और बहुत अच्छा लगता है और यहाँ आने से पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद या कहीं पे भी सर्वाधिक श्रेष्ठ सुख भुगतने के बाद जितनी संतुष्टि नहीं मिलता है इससे अधिक संतुष्टि कामाख्या धाम में आने से मिलता है और यहाँ तो मैं बड़े बाल्यकाल से कम उम्र में आया और यहाँ के कुछ पुराने साधक या पुराने लोग मुझे माँ की मानस पुत्र के रूप से भी जानते हैं और आजकल समय में जो अधिकतर लोग मुझे चकलेट बाबा के नाम से जानते हैं पर मेरा नाम है श्रीमंत रंजीतानंद गिरी श्री पंचदशनम जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर दुर्गापुर दिनाथ आश्रम से हूँ। अतिथि देव भवा अतिथि कोई भी आता है तो इनको आदर सत्कार करना जल और मिठाई देने की परंपरा है मुंह मीठा करने की परंपरा है और आसाम में भी एक परंपरा है कि कोई भी आते हैं तो पान तंबुल और फूलन गमछा देकर के इनको स्वागत करते हैं। तो इसी प्रकार का कोई भी आते हैं जो माँ के पास में आते हैं बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास भी आते मिलने के लिए तो हम इतने बाकी मिठाइयाँ रखना बनाना लाना बहुत कठिन है इसलिए हम चॉकलेट प्रसाद के रूप में देते हैं और जो लोग हमसे भाव रखते हैं हमारे साथ में जुड़े हैं या कोई आपके चैनल के माध्यम से देख करके आते हैं तो वो भी चॉकलेट का डब्बा लेकर के आते हैं ये सब लोगों का लाया हुआ चॉकलेट का डब्बा है तो मैं कोई भी आता है तो मैं हर किसी को चॉकलेट देता हूँ। तो आपके हिसाब से मोक्ष क्या है वो हम कहते हैं शिवहर शंकर गौरीशम वंदे गंगाधरमीशम शिवरुद्रम पशुपति विश्वनाथ कलहर काशी पूर्णादम भजपालोचन परमानंदन श्रीनीलकंठ तुम शरणम शिवासुरन कंजन भवदुख भंजन सेवक के पतिपाला बम आवागमन मिटाओ बोले शंकर भज शिव बारंबर। ये जो आवागमन है मैं भोलेनाथ ये जो बार बार मेरा जन्म है और मृत्यु है इसको आप रोकिए बंद कीजिए मेरा तो क्षमता नहीं है क्योंकि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा क्या करूँगा वो आप ही जानते हो मुझे नहीं पता लेकिन आपको पता है मुझे क्या होना है तो आप मुझे मोक्ष दीजिए यानी आपके इस चरणों में आश्रय दीजिए। आपके हिसाब से लालच क्या है हाँ लालच ये है कोई भी चीज़ पाने का जो आशा लालच है कोई भी चीज़ पाने का जो आशा लालच तब होता है जब किसी के हानि पहुंचा करके कुछ प्राप्त करना वो है लालच। आशा करना बुरा नहीं है व्यवहार करना बुरा नहीं है प्रेम करना बुरा नहीं है किसी के पास जाना और अपने परिश्रम से कुछ प्राप्त करके उसको भोग करना ये बुरा नहीं है। बुरा तब होता है जब हम किसी के हानि पहुंचा करके उसको प्राप्त करना चाहते हैं वो हुआ लालच। और मोह क्या है मोह ये है नहीं जो कुछ भी करते हैं जैसे वो साधारण आदमी जो है प्रेम करते हैं हम लोगों का हम लोग भी प्रेम करते हैं किससे हमारे गुरु से किससे हमारे आराध्य से पर सामान्य इंसान किससे प्रेम करते हैं एक लड़का एक लड़की से एक पति एक पत्नी से तो पति पत्नी का प्यार तो ठीक है फिर भी ठीक है लेकिन जब बिना किसी लीगली पॉइंट के अलावा इनलीगल रिश्ते में कोई जुड़ेगा तो वो जब नहीं देखेगा तब क्या कहते हैं
अच्छा नहीं लगता है और फ़ोन करके डिस्टर्ब करते रहता है, कब आओगे, क्या करना है, नहीं करना है। तो वो जो जुड़ाव है, वो जो लोकेशन है, वो जो लिंक है, वो जो मानसिकता है, उसी को मुँह बोलते हैं। जीवन क्या है? जीवन ये जो हम जिंदा है, इतना अच्छा सरलता से हम जी रहे हैं, प्रभु के कृपा से सब कुछ मुझे मिला हुआ है। इतना अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए जो जीवन मिला, जीवन ऐसे ही जीना चाहिए आन बान शान के साथ, ताकि दुनिया में सबसे टॉप मोस्ट आदमी भी अपने अंतर्गत ही रहे। ऐसे अच्छा ज़िंदगी और जीवन क्या हो सकता है। लीला परम पार तेरी बस मासुर को बस में कराया। लीला परम पार तेरी हो मोहिनी रूप बनायो हरि ने। मोहिनी रूप बनाए हरि ने। हो मोहिनी रूप बनायो हरि ने। ओम शिव 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 रखता जाए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रखता भांग धतूरा भोग लागत है जल सर्पों की माला। भांग धतूरा भोग लागत है गले सर्पों की माला। ओ भांग धतूरा भोग लागत है गले सर्पों की माला। स्पेशली मैं जब भी आई हूँ अम्बुबाची में ही आई हूँ, तो जब मेरा पहली बार अम्बुबाची का एक्सपीरियंस था उस टाइम मैंने जो माँ की ममता और उनकी जो कृपा, उनकी शक्ति को जो महसूस किया था, तो मुझे उनके प्यार ही मुझे हर अम्बुबाची में खींची लाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है।
এগৰাকী বিশেষ সাধুৰ লগত আছোঁ। তেখেতক সাধু বুলি ক'লে আচলতে মই অতুক্তি কৰাক এই কাৰণেই নহয় যে তেখেত আমাৰ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী নাগা সাধু আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে বহু স্থানত পৰিভ্ৰমণ কৰিছে দেশ বিদেশৰ লগতে তেখেতে কামাখ্যা ধামতেই এতিয়া শেহতীয়াভাৱে তেখেতে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আজি আমি তেখেতক লগ পাইছোঁ। তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। এনেকৈ নাগা সন্যাসী হোৱাৰ কথাটো আপুনি কেতিয়া ভাবিলে বা আপোনাৰ মনলৈ কেনেদৰে আহিল? চাওক, মই প্ৰকৃতি প্ৰেমী আছিলোঁ, মই প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমিক আছিলোঁ, মই প্ৰকৃতিৰ পূজাৰী আছিলোঁ। এতিয়া মই জংঘলত থকা বুলি কওঁ, আপোনালোকে ক'ব আলফা আছিলে নেকি? মই আলফা লৈছিলোঁ দেই। মই আলফাক ভাল পাইছিলোঁ, হয়তো অসমৰ প্ৰত্যেকজন লোকে আলফাক ভাল পাইছিলে, কিন্তু মই আলফা নাছিলোঁ। মই জংঘল ভাল পাইছিলোঁ, মই জংঘলত আছিলোঁ। কিয় আছিলোঁ? মই জংঘলৰ প্ৰকৃতিৰ লগত মই কিছুমান কথা পাতিছিলোঁ, গছ-গছনিৰ লগতো মই কথা পাতোঁ। এতিয়া মই গছ-গছনিৰ লগত কথা পাতোঁ আৰু মই তাৰ উত্তৰ পাওঁ। আৰু এনেকুৱা দিন এটা আহিলে মই হৰিদ্বাৰ গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত মই এটা বেলেগ পৰিৱেশ পালোঁ। মই প্ৰকৃতি প্ৰেমী আছিলোঁ নহয়। সেই যি কৈলাশ পৰ্বত, সেই প্ৰকৃতি শিৱৰ সেই স্থান, সেই দেৱভূমিত মই দেৱতা এজন লগ পালোঁ। পৰম পিতা পৰমেশ্বৰৰ কৃপা, মোৰ গুৰু মহন্ত ভৈৰৱ চেতনগিৰি ৰুদ্ৰাক্ষ মহাৰাজ, তপস্বী যোগী এজন। তেওঁ বাল্য সন্যাসী। তেওঁক সৰুতে পিতৃ মাতৃ এজন সন্যাসী তাত মানে দান দিছিলে আৰু তেওঁ এজন নগা সন্যাসী তাত। মোৰ শ্যামগিৰি মহন্ত শ্যামগিৰি বাপু, মই জটায়ুধাৰী বুলি ক'লে গুজৰাটত সকলোৱে জানে। তেওঁৰ কোলাতেই মল মূত্ৰ ত্যাগ কৰি ডাঙৰ হৈ তপস্বী এজন হৈছে আৰু সেই তপস্বীজনৰ সান্নিধ্যত মই দীক্ষা ল'লোঁ। দীক্ষা লোৱাৰ পিছত মোৰ সৌভাগ্য হ'ল, মই 5-6 বছৰৰ ভিতৰতে মোৰ সংস্কাৰো মোৰ হ'ল। কিন্তু এজন নগা সংস্কাৰ হ'বলৈ 12-13 বছৰ লাগে, তাতকৈ অধিক লাগে, বা যদি গুৰুৰ কৃপা থাকে সোনকালে প্ৰাপ্তি হয়। আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস, মোৰ যি পিতৃ মাতৃয়ে মোক জন্ম দিছিলে, শতকোটি নমন তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ অনুসৰি আজি মই এইখিনি পুণ্য এটা কাম কৰিবলৈ পাইছোঁ। আপোনালোকৰ সৃষ্টিৰ মংগলৰ বাবে, দেশৰ কল্যাণৰ ভাষা সভ্যতা সংস্কৃতি জাতি মাতৃ ভেটিৰ বাবে মই যি মোৰ কৰণীয় আছে মই কৰি গৈছোঁ। আপোনাৰ মতে আচলতে মোক্ষ মানে মোক্ষ প্ৰাপ্তি হৈছে ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি। ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি কেতিয়া হয়? যেতিয়া লোভ কাম আৰু মোহ যেতিয়া এৰিব নহয়, সেইটো ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ এটা মাৰ্গ। আৰু লোভ কি? লোভটো কেনেকুৱা হৈছে? ধৰি লওক আপুনি বিয়া বাৰু কৰাইছে, বিয়া বাৰু কৰে, আপোনাৰ অৰ্থলোভ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ কোনোবা এজনী জীয়াৰী বোৱাৰী গৈ আছে, মানে বেয়া চকুৰে চাব পাৰে যে এইজনী ছোৱালীক পালে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মৰম কৰিবলৈ মোৰ মন যাব। এইটো এটা লোভ, কাম ভাৱত আহি যায় নহয়। মোৰ নিশ্চিত জীৱন, মই যিদিনাখনে মাতৃ গৰ্ভৰ পৰা মই ভূমিষ্ঠ হৈছিলোঁ আৰু সেইদিনাখনে মই মৃত্যু হৈ গৈছোঁ। মোৰ কৰ্ণখিনি মই কৰি গৈ আছোঁ। কাৰণ জীৱন হৈছে সত্য, মৃত্যু চিৰসত্য। জন্ম পালে মৃত্যু হ'বই লাগিব। মই যিদিনাখন মাতৃ গৰ্ভৰ পৰা মই ভূমিষ্ঠ হৈছিলোঁ এই পৃথিৱীত, আৰু সেইদিনাখনেই মোৰ জীৱন এই মাটিৰ লগত মোৰ মিলি গৈছিলে। মাটিৰ লগত মিলি যোৱাৰ বাবে মোৰ নিজৰ জীৱিত পিণ্ড মই দান কৰিছোঁ। মই এতিয়া মই দেৱতা, মই আপোনালোকৰ দৰে মনুষ্য নহয় বা গৃহস্থী নহয়, মই এজন দেৱতা। এবাৰ কৈছোঁ, মই যিদিনাখনেই মই ভূমিষ্ঠ হৈছিলোঁ সেইদিনাখনেই মোৰ মৃত্যু হৈছিল, আৰু মোৰ নিজৰ জীৱিত পিণ্ড মই দান কৰি মই নগা সন্যাসী হৈছোঁ। শিলে কথা কয়, শিলত থাকে নিজা এক খোদিত ইতিহাস। যি ধৰণেৰে ইতিহাস খোদিত আছে এই কামাখ্যাৰ দেৱালয়ৰ প্ৰতিখন দেৱালত। ইতিহাস অনুসৰি কোচ মহাৰাজা বিশ্বসিংহই গুৱাহাটীৰ সমীপৰ নীলাচলত কামাখ্যা পীঠৰ উদ্ধাৰ সাধন কৰি তাতে কামাখ্যা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছিল। কোৱা হয়, সেই পীঠৰ মন্দিৰ সৰ্বপ্ৰথম নিৰ্মাণ কৰিছিল নৰকাসুৰে। পিছলৈ এই পীঠ মাটিৰ তলত বিলুপ্তপ্ৰায় অৱস্থাত পতিত হৈছিল। সেই পৰ্বতৰ অধিবাসীসকলে সেই মাটিৰ স্থূপকেই দেৱস্থান হিচাপে মানি লৈ পূজা কৰিছিল। शैलसुता कामेश्वरी हरप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। এবাৰ বিশ্বসিংহ আৰু শিষ্যসিংহই নৈশ অভিযানকালত সৈন্যসকলৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে আৰু পথ হেৰুৱাই বিভিন্ন স্থানত ঘূৰি পকি অৱশেষত নীলাচল পাহাৰত উপস্থিত হয়গৈ। তেওঁলোকে তাতে মাটিৰ এক স্তূপৰ কাষত গছৰ শিপাত বহি থকা এগৰাকী বৃদ্ধাৰ পৰা জানিব পাৰিলে সেই স্তূপটো পুৰণি অধিবাসীসকলৰ দেৱস্থান। ৰজাই সেই পীঠস্থানতে তেওঁৰ সৈন্যবাহিনীৰ সৈতে মিলনৰ অৰ্থে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায় আৰু তেওঁৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয়। সেই কাৰ্যৰ পাছত ৰজাই সেই স্থানৰ মহত্ব দেখি বিস্মিত হয় আৰু তাতেই স্বৰ্ণ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি দিম বুলি সংকল্পবদ্ধ হয়। পিছত সেই স্থানৰ খননত তাত এক প্ৰাচীন মন্দিৰৰ অৱশেষ আৱিষ্কৃত হয়। ৰজাই সেই ভগ্নাৱশেষৰ ওপৰতে ইটাৰে এক নতুন মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছিল। প্ৰতিটো ইটাত 1 ৰতি সোণ প্ৰদান কৰা বুলি জনশ্ৰুতি আছে। পিছত আকৌ
1553 চনত মুছলমান সেনাপতি কালাপাহাৰে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰি কামাখ্যা মন্দিৰ ধ্বংস কৰে। তাৰ পিছতে এই মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে বিশ্বসিংহৰ পুত্ৰ কোচ নৃপতি মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ চিলাৰায়ে। আন এগৰাকী বাবা আমাৰ সৈতে আছে। বাবাৰ সৈতে আমি পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। बाबा प्रणाम। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। जी आप कहाँ से हैं और यहाँ पे कब से आ रहे हैं? हम लोग वाराणसी से आते हैं, बाबा विश्वनाथ के नगरी से। काशी और कामाख्या दोनों एक राशि है। जब शिव जी काशी से चले थे कैलाश के लिए तो यहीं कामाख्या में ही उनका पहला पड़ाव था। इसलिए काशी, कामाख्या और कैलाश तीनों का एक अनुनाश्रय संबंध है। बाबा और मैया का अनुनाश्रय संबंध है इस पृथ्वी से। और विगत 20 वर्षों से हम यहाँ आ रहे हैं, प्रत्येक अम्बुवासी माता के दरबार में। पर यहाँ आकर जो लगता है कि जो भी मुराद यहाँ मांगता है माँ उसकी सभी मुरादों को पूरा करती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्थान का हो, जो माँ से मांगता है उसको मिलता है। शास्त्रों में लिखा गया है यत्रस्तु भोगम नहीं तत्र मोक्ष। जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है, और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है। यत्रस्तु भोगम नहीं तत्र मोक्ष, यत्रस्त मोक्षम नहीं तत्र भोग। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोग्यश्च मोक्षश्च ददाति नित्यम। महाराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी अखिल ब्रह्मांड नायिका माँ कामाख्या अपने भक्तों को भोग भी प्रदान करती हैं, मोक्ष भी प्रदान करती हैं, और स्वर्ग भी अपमान करती हैं, और अपवर्ग भी प्रदान करती हैं। अपवर्ग क्या है? अपवर्ग संसार का ऐश्वर्य है। कामाख्या की हर हर महादेव। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে মা কামাখ্যা ধামত এতিয়া দেশী বিদেশী সাধু সন্ন্যাসীৰ ভিৰ। বিভিন্ন দেশৰ পৰা তথা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে সাধু সন্ন্যাসী। তেনে এগৰাকী বিশেষ সন্ন্যাসী আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, যিগৰাকী 1984 চনৰ পৰা আজিলৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে তেখেত মা কামাখ্যা ধামলৈ আহি আছে। অম্বুবাচী উপলক্ষে তেখেত মা কামাখ্যা ধামলৈ প্ৰতি বছৰে আহি আছে। আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। বাবা প্ৰণাম। जी आप कब से आ रहे हैं? मैं 84 से आ रहा हूँ। पहले ट्रक से आता था और झाड़ूबाड़ी में उतरता था, वहाँ से पैदल आता था, और यहाँ गलियों में इतने बोल्डर पड़े रहते थे, पैरों में चुभता था। तो बाबा बात ऐसा है कि हर कोई कुछ ना कुछ मांगने के लिए नहीं तो कुछ ना कुछ नहीं मांगने के लिए भी यहाँ पे आते हैं, माँ को दर्शन देने के लिए आते हैं। तो पहली बार जब आप आए थे तो क्या सोच के आए थे कामाख्या माँ के पास? क्या मांगेंगे? माँ से क्या मांगूँ? माँ तो सब कुछ दिया ना। मुझे माँ ने क्या नहीं दिया? इतना बड़ा जन्म दिया, क्या नहीं दिया मेरे लिए? उसी के सब दिया हुआ मेरे पास भी। जिस पर हाथ रखता हूँ वो तत्काल में ठीक हो जाएगा, कैसो बीमारी होगी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि माँ कामाख्या की देन है, मेरे पास में नहीं, माँ ने मुझे दिया था। तो आपने कामाख्या के अलावा देश का कौन सा धाम तीर्थ स्थान घुमाए? कामाख्या के अलावा मैं कहीं नहीं जाता, केवल एक ही मानता हूँ माँ को। माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। तो यहाँ जब अम्बुबासी खत्म होगा तो आप कहाँ जाएंगे? अभी तो मैं महाराष्ट्र जाऊँगा, नागपुर जाऊँगा, फिर इसके बाद मैं कहीं शमशान में कहीं भी जहाँ भी रमता जोगी बहता पानी कहीं भी जा सकता हूँ, क्योंकि घर द्वार हम लोगों का अब नहीं है, क्योंकि शमशान के अलावा हमारा कुछ नहीं है। ना माँ है ना बाप है, मेरा तो सबसे बड़ी माँ बाप यही है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। আপোনালোকে কেইবাগৰাকীও ভক্ত সন্ন্যাসীৰ সাক্ষাৎকাৰ ইতিমধ্যে দেখিছে, তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জানিছে। কিন্তু কেইজনমান ভাইটি একদম কণমানি ল'ৰা, তেওঁলোক আহিছে স্কাউটছ এণ্ড গাইডছৰ, তেওঁলোক স্কাউটছ
আৰু তেওঁলোকে সেই অনুসৰি তেওঁলোকে ইয়াত আহিছে, নিজৰ নিজৰ কৰ্তব্য তেওঁলোকে পালন কৰি আছে। এতিয়া নিশা যথেষ্টখিনি হৈছে, ঘৰলৈ মনত পৰা নাই? পৰিছে আৰু তো মা দেউতাক কি বুলি কৈ আহিছা? কৈছে, মাহঁতে কৈ আছে আমাৰ কামাখ্যা ধামত মানে ডিউটি পৰিছে, মানুহক সাহায্য কৰিব লাগে, মানে ৰাস্তা ঘাটে কৈ দিব লাগে কোনফালে কি ৰাস্তা আছে, আৰু ভিৰটো মেইনটেইন কৰিব লাগে, সেইটোৱে আমাৰ কাম আৰু। মা দেউতাই কি কৈছে যেতিয়া তুমি ইয়ালৈ আহিম বুলি প্ৰথম কৈছা, ইয়াত যেতিয়া মানৱ সেৱা কৰিম বুলি তুমি কৈছা, তেতিয়া মা দেউতাই কি কৈছে? মাহঁতে ভাল পাইছে, কৈছে যাবলৈ কৈছে আৰু ভালকৈ থাকিবলৈ কৈছে, মানুহক হেল্প কৰিবলৈ কৈছে, মাহঁতেও ভাল পাইছে। মা কামাখ্যাৰ বিষয়ে কি ক'বা? কি ক'ম আৰু, মাতো মায়ে হয়, চবৰে মা হয়। মা কামাখ্যা আহি ধামত আহিছোঁ, দৰ্শন কৰিম, মনৰ আশাবিলাক ক'ম, পূৰ্ণ হ'ব, আকৌ আহিম পূজা দিম, এইটোৱে আৰু। অম্বুবাচী মানেই উৰ্বৰাৰ পূজা, আৰু বৃষ্টি অবিহনে উৰ্বৰা অসম্ভৱ। আৰু এতিয়া নীলাচলৰ বুকুতো বৰষুণ নামিছে, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ভক্তসকলৰ কিন্তু উৎসাহ কোনো কাৰণতে কমি যোৱা নাই। ভক্তৰ ভিৰ একেধৰণেই আছে, লক্ষাধিক ভক্তই এতিয়াও মাৰ শ্ৰীচৰণত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ ভিৰ কৰিছে কামাখ্যা ধামত।
অনেক জনশ্ৰুতি, অনেক লোকবিশ্বাস। তেনে এক লোকবিশ্বাস তথা জনশ্ৰুতি আছে যে মই এই মুহূৰ্তত যিটো পথত উপস্থিত আছোঁ, যিটো খটখটিত উপস্থিত আছোঁ, এই খটখটিটো, এই চিৰিটো নিৰ্মাণ কৰিছিল নৰকাসুৰে, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা নৰকাসুৰ, যি কামাখ্যা দেৱীৰ ভক্ত আছিল। আৰু এদিন নৰকাসুৰে দেৱীক দেখিবলৈ পাইছিল আৰু দেৱীক দেখা পাই তেওঁৰ প্ৰেমত মুগ্ধ হৈছিল, তেওঁৰ প্ৰেমত আবদ্ধ হৈছিল। আৰু তাৰ পাছতেই তেখেতে কামাখ্যা দেৱীক প্ৰেম নিবেদন কৰিছিল। আৰু সেই প্ৰেম নিবেদনৰ পিছতেই কামাখ্যা দেৱীয়ে নৰকাসুৰৰ প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যানৰ বাবে তেখেতক এটা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল যে একে ৰাতিতে তুমি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ তুমি এটা চিৰি নিৰ্মাণ কৰা, যিটো চিৰিয়ে একে ৰাতিৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ হয়। আৰু সেয়া নৰকাসুৰে কিন্তু কৰি দেখুৱাইছিল আৰু একে ৰাতিতে গঢ় দিছিল এইটো চিৰি। আৰু সেই চিৰি সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ লোৱা দেখি কামাখ্যা মায়ে চালনা কৰি দুবাৰকৈ কুকুৰাৰ দাগ দিয়াবলগীয়া হৈছিল। আৰু যেতিয়া নৰকাসুৰে এই চিৰি সম্পূৰ্ণ কৰি মা কামাখ্যাৰ ওচৰলৈ গৈছিল, তেতিয়া কৈছিল, যিহেতু কুকুৰাই দাগ দিছিল, গতিকে তোমাৰ প্ৰেম মই প্ৰত্যাখ্যান কৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছতে যিটো কুকুৰাই দাগ দিছিল, সেই কুকুৰাটোক ইয়াৰ পৰা খেদি নি এঠাইত হত্যা কৰিছিল। আৰু সেই ঠাইখনৰ নামেই বৰ্তমান কুকুৰা কাটা পাহাৰ। NB নিউজৰ দৰ্শকসকলক মই এটা বিশেষ পৰিৱেশ দেখুৱাব খুজিছোঁ, যি পৰিৱেশে বৰ্ণনা কৰিব আচলতে ভক্তি কি, শ্ৰদ্ধা কি। আমি যদি দেখুৱাওঁ, এই মুহূৰ্তত আমি আছোঁ মালিগাঁৱৰ ফুটব্ৰিজত। আৰু এই ফুটব্ৰিজত আপোনালোকে যদি চাই, এতিয়া কেউফালে মানুহ আৰু মানুহ সকলো কিন্তু এতিয়া নিৰ্ধাৰিত অৱস্থাত আছে। এয়াই হয়তো ভক্তি, এয়াই হয়তো ভাৰতীয় সংস্কৃতি, আৰু এয়াই হয়তো ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মহিমা, মাহাত্ম্য আৰু ঐতিহ্য। আপোনালোকে যোনফালেই মন কৰে সেইফালেই আপোনালোকে দেখিব যে মানুহ আৰু মানুহ, তেওঁলোকে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি যি কষ্ট হৈছে, তেওঁলোক ইমান দূৰ ওপৰলৈ উঠি গৈছে, উভতি আহিছে, সেই কষ্টক আওকাণ কৰি কেৱল আত্মাৰ প্ৰতি, পৰমাত্মাৰ প্ৰতি বিশ্বাস ৰাখি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে এইখিনি অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে। আৰু কোনোবা যদি শুইছে পদপথত, কোনোবা শুইছে ফুট অভাৰব্ৰিজত, কোনোবা আকৌ শুইছে ডিভাইডাৰত, কিন্তু সকলোৱে এটাই বিচাৰিছে, আমি পৰমাত্মাৰ পৰা যি বিচাৰিছোঁ, আমি মা কামাখ্যাৰ পৰা যি বিচাৰিছোঁ, সেয়া যাতে আমি পাওঁ। সকলোৱে মনোকামনা পূৰণ হোৱাটোৱেই কামনা কৰিছে।
কামাখ্যা ধামৰ সৈতে ভূতনাথ শ্মশানৰ আছে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক কাৰণ যিসকল অঘৰী বাবা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহে তেওঁলোকে ইয়াতে আহি তেওঁলোকৰ নিয়মিত পূজা পাঠ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ভূতনাথ শ্মশানত আজিও তেনেকুৱা এখন পূজা চলি আছে আমি তেনেকুৱা দুই এগৰাকী অঘৰী বাবাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আচলতে তেওঁলোকে মাজনিশা দুভাগ ৰাতি তেওঁলোকে এই শ্মশানৰ মাজত কি পূজা কৰি আছে जी बाबा प्रणाम आदेश गुरु गोरखनाथ की। जी ये पूजा देख रहा हूँ हम लोग तो पूजा क्या पूजा चल रहा है ये अघोर पूजा है। ये हम लोग अघोर क्रिया कर रहे हैं। हम लोग अघोर पीर हैं। हम अघोरी क्रिया करते हैं जन कल्याण के लिए। हम लोग पूजा करके और जन कल्याण के लिए स्वर शक्ति पाके जन कल्याण के लिए रक्षा करने के लिए हम लोग पूजा करते हैं। तो अघोर पूजा का महात्मा क्या है देखिए अघोर पूजा का महत्व होता है जन कल्याण के लिए। स्वयं अपने लिए पूजा नहीं किया जाता है। अगर हमारे लिए पूजा होता तो हम करके निकल जाते, लेकिन हम समाज के लिए जन कल्याण के लिए हम पूजा करते हैं अघोर क्रिया कि संसार को और जो जन कल्याण के लिए जो समाज की रक्षा हो, इसीलिए कि हम लोग पूजा करके उसकी रक्षा करने के लिए हम माँ कामाख्या से विनती करके उसकी रक्षा के लिए तत्पर हम विनती करते रहते हैं। इस पूजा का महत्व ये है। जी बाबा आप ये कितने सालों से करके आ रहे हैं इसका जो मेरा क्रिया जो कई सालों से मैंने बचपन इस क्रिया को अपनाया हूँ और मैं इस बचपन से इस क्रिया को चला रहा हूँ और ये सत्य है। राम भी सत्य है तो भूत भी सत्य है। वो दृश्य शक्ति का क्रिया है। वो दृश्य भगवान भी वो दृश्य भूत भी दोनों सत्य है। जिस लाइन से जिसको पूजा करता जिससे क्षमता होता उसको वही करके उसका जन कल्याण के रक्षा के लिए उसका कार्य करता। जी आप यहाँ कामाख्या धाम में कितने सालों से आ रहे हैं भूतनाथ में कितने सालों से आ रहे हैं मैं तो काफ़ी दिन से आ रहा हूँ। मैं घर से भागा था, बचपना में भागा था। ये तंत्र मंत्र विद्या के चक्कर में कहावत सुनाई चल रहा था गाँव देहात में। उसी सुन के मैंने यहाँ आया और मैं आते रहा और मेरे को ये माँ कामाख्या ने खींच लिया। हर साल कामाख्या आता हूँ, हर साल तारापीठ जाता हूँ, उज्जैन जाता हूँ, काशी विश्वनाथ जाता हूँ, पशुपतिनाथ काठमांडू जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। जी बाबा ये अघोर पूजा जो आप बोल रहे हैं वो कितने बजे से कितने बजे तक समापन होता है देखिए बाबा ये 11 बजे रात्रि से लेके 3:45 तक इसकी टाइमिंग है। 11 बजे रात से 3:45 तक इसकी साधना होती है। सब लोग सोता है तो अघोर जागता है, सब जागता है तो अघोर सोता है। जी अभी के लिए आपको धन्यवाद बोलते हैं बाबा प्रणाम कामाख्या नमस्तुभ्यं शैलसूता कामेश्वरी हरप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे भुवनेश्वरी भवतारिणी मङ्गलमोक्षप्रदायिनी कामनसिद्ध कामेश्वरी शक्तिशैलसमन्विता
अधिष्ठात्री असमदेशे आवाहयामि सुसर्वदा सिद्धक्षेत्रनीलाञ्चले शक्तिपीठ प्रतिष्ठितं नमस्तु कामाख्या देव्यै च तेजोमयं दिव्यं प्रणमामि सदा भक्त्या मां कामाख्या परं शुभम् कामाख्या नमस्तुभ्यं शैलसुता कामेश्वरी हरप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे भुवनेश्वरि भवतारिणी मङ्गलमोक्षप्रदायिनी कामनसिद्धकामेश्वरी शक्तिशैलसमन्विता अधिष्ठात्री असमदेशे आवाहयामि सुसर्वदा सिद्धक्षेत्रनीलाञ्चले शक्तिपीठ प्रतिष्ठितं नमस्तु कामाख्या देव्यै च तेजोमयं दिव्यं प्रणमामि सदा भक्त्या मां कामाख्या परं शुभम् भगवती भगेश्वरी योनिमुद्रा महोदरी शरण्ये शक्तिरूपाय देवी कल्याणि नमस्तुते त्वम् अद्या देवी कामाख्या रूपेण जगन्मातृका तच्चरणारविन्द सर्वभूतानां समर्पयामि कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी देवी जगन्माता योनिमुद्रे नमस्तुते সুদূৰত খোৱা নীলাচল আৰু অম্বুবাচী বুলি ক'লেই মায়াময় হৈ পৰে নীলাচলৰ বুকু। আজি ঠিক তেনে কিছু পৰিৱেশৰেই আমি কিয়দংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগেই আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পৰাগ আৰু অংকুৰৰ সৈতে মই দেৱপ্ৰতিমে বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। मा कामाख्या नमस्तुभ्यं शैलसुता कामेश्वरी हरप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे NB নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।